Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, dear students, for joining me today's session. My name is Hameed sir, and on behalf of Institute of Freelancing and Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. हमारा sequence of lectures जो कि web design and development से है, today is the second lecture, which is of the web development process overview. How this whole process goes on, that's what's the whole aim of this session is. And by the way, I'm recording this session, and the recording will be shared after this lecture. Okay, I have divided based on my experience into 12 different steps. And by the way, you can note down as well as you can take the notes from this recording also. And if anyone wants to take the print screen, the screencast, the screen sharing, you can do that also. It is totally allowed. Okay. Okay, G. Let's start with the first one. सबसे पहला step when you start the web development design या development, in either of the case, that starts from the flow diagram. Flow diagram will help you to start up your work. ठीक है? So user flow diagrams are used primarily by product and user experience team. UX stands for user experience team, to figure out the flow of the website or applications after you have thought about the customer's experience and user needs. To best understand these needs and the experience you want your customers to have, it's important to map the visualize them. इन शॉर्ट सादा लफ्जों में जब आप किसी भी डिजाइन, किसी भी वेबसाइट का डेवलपमेंट या डिजाइन का वर्क स्टार्ट करने लगते हैं, तो इट्स बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम स्केचेस फर्स्ट. ठीक है? तो स्केचेस में फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि आपकी वेबसाइट है एंड योर वेबसाइट नेम इज hameedasghar.com, to start up with, what would be the menus for this? Now that is quite obvious कि it's a personal website, and as well as personal as well as .com, जो कि कल मैंने TLD top level domain बताया था. .com means commercial based website, and the purpose of this would be just a commercial purposes, right? So इसमें आप अपने मुतालिक ज़्यादा information देंगे. And if you remember, कल मैंने अपनी presentations में sequence of lectures में ये show किया था कि why the menu systems is important, why these menus are always at the top, because आप जैसे ही login करके किसी website पे जाते हैं, the first thing which you want the hierarchy, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी book को open करते हैं, so the index page after the starting of the book name या जो भी book का title है, उसके बाद जो पहली चीज आती है, that is called the index of this whole book. ताकि अगर आप सीक्वेंस में जाना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक 1 टू ऑनवर्ड, आप वैसे जा सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम टॉपिक 1 या टॉपिक 2 या टॉपिक 3 से ऑनवर्ड जाना चाहते हैं, तो इट विल गाइड यू टू डायरेक्टली स्विच टू दिस पेज. लेकिन in the website case it is electronically based, this is hyperlink based. आप directly menu पे click करते हैं and you switch from one link to another and then to the third, and menu भी automatically साथ साथ चलता रहता है, and you can switch to that also. So dear students, जब भी आपके पास कोई भी ऐसा project जो कि web development related होगा, you have to start from the flow diagram. Users का flow diagram, that is something you must have to create in the first instance. Okay, now the next step after this first is step number 2, and that is the hosting solution types preferences. For example, my website is my personal website, right? इसके लिए मुझे specialized server purchase करने की ज़रूरत शायद probably नहीं है, because personal website is just a personal website where you want to present what you have done and that's it. उसके commercial purpose नहीं है. लेकिन if you want कि अगर आपका बड़ा purpose है, ये commercial purposes है, like Alibaba, like गूगल या कोई बड़ी कंपनी है जो सारी दुनिया को सर्विसेज दे रही है, इट्स नॉट लाइक अ पर्सनल वेबसाइट, इट्स अ ह्यूज वेबसाइट जिसको सारी दुनिया ने एक्सेस करना है. सो यू मस्ट हैव टू हैव अ काइंड ऑफ डेडिकेटेड सर्वर या इस तरह की कुछ चीजें जो उसके लिए हों. सो what exactly is a shared web hosting? Shared web hosting means just shared, बिल्कुल ऐसे ही जैसे
Your website is hosted on a server shared by other websites. The advantage of this setup is a shared cost, right? You can pay as little as $5 to $10 per month for sharing a super server with probably hundreds and thousands of other websites. अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज इज क्वाइट ऑब्वियस कि इट इज वेरी लो कॉस्ट. सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. यू नीड टू पे अ ह्यूज अमाउंट अगर आपने किसी कंपनी के लिए सर्वर बनाना है. बट इफ यू वांट आपको वही सर्वर मिले फॉर योर पर्सनल वेबसाइट भी, तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू कंप्रोमाइज. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी अच्छे अपार्टमेंट में अपने लिए फ्लैट लेते हैं, तो यू हैव टू शेयर योर अपार्टमेंट विद अदर्स, ताकि आपकी लोकेलिटी बहुत अच्छी रहे लेकिन एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट कम हो जाए. ओके, द नेक्स्ट इज द रीसेलर वेब होस्टिंग अकाउंट. रीसेलर वेब होस्टिंग अकाउंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एज वेल एज द बिजनेस ओनर्स दे डू दिस काइंड ऑफ वर्क. वो वेब होस्टिंग के रीसेलर अकाउंट ले लेते हैं. In short, सादा लफ्जों में, resells hosting packages are basically a shared hosting accounts with extra tools to help you resell hosting space. For example, आपकी वेबसाइट में आपकी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है 1 TB स्पेस. या लेट्स सपोज चले 1 TB के बजाय 100 TB कर लें, या 1 TB इज गुड एनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग. 1 TB स्पेस. अब आपको पता है वी हैव अबाउट स्टूडेंट्स हियर, कितने हैं, 7-8 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. एंड 7-8 स्टूडेंट्स ने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है. एंड ऑफ कोर्स हर किसी को अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड इज अबाउट 1 GB. 1 GB तो बड़ी स्मॉल सी स्पेस है. सो 1 GB का मतलब है वी जस्ट नीड अबाउट 7-8-10 GB ऑफ स्पेस. स्टिल 1 TB मीन्स बहुत ज्यादा स्पेस विच इज अवेलेबल वेकेंट, and a person who buys this space who can sell out the web space के छोटे छोटे chunks को बाकी किसी को बेच सकता है. That's how this whole business moves on. Okay, I just do not want to go further into details because the idea is just to tell you the basic concepts. The third is the cloud-based web hosting. It refers to fairly a new hosting technology, which is actually a cloud-based hosting, and that lets hundreds of individual servers work together so that it looks like one joint server. The idea is that as the need grows, the hosting company can just add more community hardware to make an even ever large grid or cloud. ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है. यू वांट टू जॉइन अ बिग कंपनी लाइक GoDaddy. उनके होस्टिंग सर्वर्स दे आर क्लाउड बेस्ड. क्लाउड बेस्ड मींस इट रियली डजंट मैटर कि कंपनी फिजिकली किस जगह एग्जिस्ट करती है. अगर उनके सर्वर्स दे आर क्लाउड बेस्ड मींस दे हैव some servers based in US, and most probably in Europe as well as in Asia, at the same time in the Australia. So they are cloud-based system के साथ they are connected to each other. और let's suppose अगर चाइना में requirement ज़्यादा होती है तो they can create another cloud. तो वो cloud आपस में connect करके web hosting services provide करें. Okay, let's move to the fourth option is virtual private servers. ये वो सर्वर्स हैं जो कि virtual हैं लेकिन private सर्विस हैं. Shared one physical server but act like a multiple separate servers. A VPS is the stepping stone between sharing hosting and getting your own dedicated machine. Even though each VPS instance shares hardware resources, they are allocated and dedicated slice for the computing resources. So ये इसकी further detail अगर आपने study करनी है, you can go to Google and just search virtual private servers and the difference and advantage and disadvantage of virtual private servers. You will find out so many interesting facts and figures about this. So the fifth one is the dedicated server. Dedicated server means I just do not want कि मेरे parking lot कोई और share करे, regardless कि मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हो या ना हो. That is dedicated to me, चाहे उसके लिए मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़े. ठीक है. So with the dedicated servers, you do not have to worry about other websites on the share servers taking up your resources and slowing your website down, right? ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मोटरवे पे जाते वक्त टॉप लेन या वो वाली लेन जिसके ऊपर वो काइंड ऑफ वो लगा होता है,
क्या उसे कहते हैं, काइंड ऑफ कार्ड, जो जिसको वो बाय डिफॉल्ट स्कैन करता है एंड इट गोज लाइक, दैट इज डेडिकेटेड लाइन टू ऑल ऑफ दोज जो कि उसको डायरेक्टली क्रॉस कर देते हैं विदाउट वेट या विदाउट लाइन में लगे हुए, सो दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड लाइन्स, ठीक है जी, डेडिकेटेड सर्विस. द सिक्स्थ वन इज co-location. Co-location means you bring in your own servers hardware and they provide power, cooling, physical security, and an internet uplink. This means you are responsible for your own server software, data storage, backup procedures also. So usually it doesn't happens like this. Co-locate करने की आपको जरूरत नहीं होती because these companies जो कि internationally known है, ये इतनी बड़ी होती हैं कि ये आपको इस तरह की unnecessarily kind of कुछ चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, and you find out so many interesting so many जो उसके पास variety of options है, उन्हीं में से कोई एक option हो सकती है, but this is one type of hosting solution which is physically exist and that is called co-location. The seventh one is self-service web hosting. Self-service web hosting means that you do it all yourself. You buy the servers, install अपने operating system install, उसकी configuration, उसके ऊपर softwares, make sure that you are sufficient cooling and power in your machine room, and double up everything for redundancy, मतलब उसके बैकअप के लिए सारा कुछ अपने रूम में लगाएं, राउंड द क्लॉक उसको स्टैटिक आईपी के साथ कनेक्ट करें एंड ताकि दुनिया उसको एक्सेस कर सके, और जब उसको दुनिया एक्सेस करेगी उसके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, उसकी प्रोसेसिंग इतनी उसकी ज्यादा हो जाएगी कि वो हीट जनरेट करना शुरू कर देगा, और दिस उसके लिए फिर आपको कूलिंग चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए फायर प्रूफ चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दिस, ठीक है. So self-service hosting is like this, and finally the last one is managed WordPress hosting. Managed WordPress hosting is a service where the web hosting provides will keep your WordPress installation up to date, which can help protect your site from security threats that would allow hackers into your website, right? So these are the basic step number 2 के ऊपर 8 different type of hosting solutions and types and preferences हैं जो कि आपके पास available है. Okay जी, so let's proceed to the third step, that is domain name registration. Domain name registration जिस तरह हमने yesterday study किया था, if you want to go there, you join any of the bigger company like GoDaddy, like Namecheap, and there are so many companies. उनमें से किसी को आप ज्वाइन करते हैं, they will give you that kind of facility कि आप चाहे .net, चाहे edu, चाहे info, चाहे base, चाहे .com, .org, whatever type of domain you want, they can provide you, right? So step number 4 is set up a local testing servers. Set local testing servers mean हम लोग usually ऐसे होता है in our era, in our domain, in our field के हम लोग सब कुछ लोकली डेवलप करते हैं अपने पीसी के ऊपर, और अपने पीसी के ऊपर डेवलपमेंट करने के बाद हम इसे अपलोड करते हैं टू द सर्वर्स. सो दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कि यूजुअली हमारे यहाँ हमारे सर्कल में हम लोग यूज करते हैं. वो कैसे, और इंशाल्लाह इन आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं में से कुछ यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स भी डेवलप करेंगे. XAMPP, XAMPP, that stands for cross multiple platforms. XAM, cross multiple platforms. A stands for Apache database, and Maria with MariaDB, and P stands for PHP, and the last is Perl. So that is XAMPP, and WAMP is Windows. Windows के साथ ये एप्लीकेशन यूज होती है, Windows, Apache, and MySQL and PHP. LAMP is for Linux, and M stands for Macintosh के लिए. हमारे पास चूंकि Windows based environment है, तो हम लोग usually WAMP या XAMPP जिसमें क्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, इन दोनों में से कोई ना कोई यूज करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली हम लोग अपने पास लोकल पहले ये इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद we will be able to install WordPress on our local machine, और वहां से हम करते करते we move to the next levels जहाँ पे हम लोकल डेवलपमेंट करने के बाद
उसकी टेस्टिंग करने के बाद we will upload this to the next server. So the fifth step is the production environment server. Production environment server means जिस जगह पे आप बैठे हैं अपने घर में, ड्राइंग रूम में, जो भी आपने अपना वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, जिस जगह पे भी, वहां पे यू नीड अ काइंड ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर इनसाइड योर लैपटॉप, एंड इस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के विद द हेल्प ऑफ जो मैंने टूल्स आपको ऊपर बताए, उनकी मदद से आप लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं और उसको अपलोड करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज सेट अप योर FTP सर्विसेज. सेटअप करना कि फाइल आपकी ट्रांसफर जो आपके लोकल पीसी पे हैं, हाउ वुड दे ट्रांसफर टू द वेब सर्वर, जहां पे जाके ये होस्ट हो. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जो आपकी लोकल मशीन से निकलकर सर्वर एंड सर्वर से कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी, दैट इज कॉल्ड FTP सर्विसेज. हमने ये इंस्टॉल करनी है. इसके लिए मैंने लास्ट टाइम कुछ लिंक्स शायद प्रोबेबली मैंने शेयर नहीं किए, तो मैं थोड़ी देर में चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा या आफ्टर द सेशन में शेयर कर दूंगा. यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड दिस FTP काइंड ऑफ जो एप्लीकेशंस, छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल हैं, और यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल देम. The seventh step it is the start development front end of the website. Front end means the graphical interface of the website, जहाँ पे आप color scheming, where to come the home button, where to come the menu, where to come the pictures, where you need to place the videos and things like this. ये आप किस तरीके से, किस color scheme के साथ किस तरह place करेंगे, that is the starting point of the development of your website. So the next step is the eighth one, and that is set up database configuration. ये आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी सारी चीजें जब गेयर अप करेंगे, तो उसके लिए हमारी ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी कि वेबसाइट के साथ जो उसके बैक एंड के ऊपर डेटाबेस है उसको कॉन्फ़िगर करना. ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये भी इस कोर्स का हिस्सा है जो आगे आपको बताया जाएगा. नेक्स्ट इज द डायनामिक वेबसाइट कनेक्टिविटी. इफ इन केस यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर सम ऑफ योर क्लाइंट, जो कि बहुत बड़ा क्लाइंट है, जहाँ पे काइंड ऑफ डायनामिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे यू नीड टू मेक दिस कंफर्म कि आपकी कनेक्टिविटी टू द लाइव सर्वर, आपके लोकल पीसी कनेक्टेड टू द लाइव वेबसाइट एंड सर्वर्स, वो सारा का सारा कनेक्ट एस्टैब्लिश होने चाहिए. दैट इज हाउ यू प्रोसीड टू दैट स्टैंडर्ड लेवल्स. Okay जी, then the next step comes up with the uploading with file transfer protocol. FTP की एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ये सारा कुछ ट्रांसफर करेंगे, अपना डाटा FTP के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अपने सर्वर को और डाटा ट्रांसमिट करेंगे अपने लोकल मशीन से उसको. ये भी इंशाल्लाह पार्ट ऑफ दिस होल लेक्चर है. ये इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे लोकल डेवलपमेंट करने के बाद, FTP अकाउंट बनाने के बाद. उसके बाद जब वो अकाउंट्स बन जाएंगे फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे. राइट. सो द स्टेप 11 इज द DNS रिकॉर्ड. DNS रिकॉर्ड क्या करता है कि आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर्स कलेक्टिवली उसको रिफाइन करता है. लाइक डोमेन नेम इज समथिंग एल्स दैट नीड्स टू कनेक्टेड विद सम वेब स्पेस. उसके पीछे उस डोमेन नेम के सर्वर्स होते हैं. ये आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट में, मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट वीक से वी विल बी इन द डेवलपमेंट फेज. तो ये सारी की सारी चीजें ये लाइव आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. और द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज द ईमेल सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन. जब आपकी साइट अपलोड हो जाएगी, ऑल विल बी सेटल्ड डाउन एंड सारी की सारी चीजें जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी, इवेंचुअली दैट वुड बी द राइट टाइम कि आप अपनी वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, यानी ईमेल की ईमेल्स के सेटअप. by helping by configuring this email setup, app automatically, for example, my website is Hameed Asghar at hameedasghar.com. So my website could be my email address could be CEO at hameedasghar.com. Yeah, let's suppose instead of this, sales at hameedasghar.com.
या कॉन्टेक्ट अस एट hameedasghar.com या help@hameedasghar.com, कोई भी इस तरह की 3 4 5 डिफरेंट टाइप की ईमेल्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनका कितने स्टोरेज हर ईमेल एड्रेस को देनी है, हाउ वुड यू बी एबल टू एक्सेस डायरेक्टली आपके जो ईमेल, जो आपका वेब का कंट्रोल पैनल है वेबसाइट, सॉरी विंडोज के अंदर, उसके साथ भी कॉन्फ़िगर हो सकता है कि वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाए, एंड इट विल गिव यू द वेब एक्सेस आल्सो, विद द हेल्प ऑफ वेब एक्सेस, लाइक अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर, ब्राउजर पे जाकर अपनी बिल्कुल ऐसी जैसा mail.google.com करते हैं, तो इट मूव्स फ्रॉम गूगल टू मेल का जो सर्वर है उस पे चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपना एक सर्वर का छोटा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे जाके हम लोग सारी की सारी चीजें क्रिएट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये है सारे के सारे वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जिनको हम ऑप्ट करते हुए, जिनको हम स्टैंडर्डाइज करते हुए, we will proceed further step by step ahead। ठीक है। सो आइडिया इज नॉट दिस कि यहाँ पे हमने स्टार्ट करना, यहाँ पे हमने रुकना नहीं है, यहाँ से हमने एक्चुअली स्टार्ट करना है। सो अभी तक की इस सारे के सारे सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, so you can ask me right now, because things are getting gradually, slowly and gradually, they are getting a bit difficult। सो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पास करूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन, अगर कोई आपको क्वेश्चन करना चाहता है। अहमद, अश अशमल, प्लीज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। चलो, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर, एंड